Hey, good morning, all. Can you hear me? Yes, sir. Thank you. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Okay. So day before yesterday, okay, we have started this concept, right? Passing the data from the variable. But I remember on that day, uh, we are not able to do that code right on the browser. So I will tell you the reason also. Okay. What was the reason? Anybody have tried? किसने try किया है for the simple login logout code? Yes, sir. Is it okay for you? It's going to give you the result, or you also get some yes error or issues. कुछ प्रॉब्लम आया आपको? I'm नहीं Okay, रन हुआ बट ऐसे ही आ रहा था कनेक्शन रीसेट करके. okay, okay. Yeah, I will tell you. Okay, this connection reset, right? You are saying? Yes, sir. No, no. See, we are not worried about this type of error. Okay. See, whatever the last statement you are getting as per your code, so it's okay. Okay. If you are not getting up to the last execution, that time we can say error. But don't go with this type of error like connection reset or something. Okay. I will show you that also. देखिए हमको एरर कब कब आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज ओके हम क्या कर रहे थे फर्स्ट स्टेप लाइक वी आर ट्राइंग टू सेट द प्रॉपर्टी and launching the browser, right? Second step, we want to navigate to the proper URL, whatever the URL which we are giving. Okay. Next, for example, if you want to get a title, or simply if we just want to give the username, simply line number 17. If you will not give any pause for the execution, what will happen exactly? Depending upon your compatibility of your browser, your internet speed, after this line number 12, if you will not give these two lines, okay? Which line? These two lines. What will happen? आपके सिस्टम से डायरेक्टली एग्जीक्यूशन इतना फास्ट होता है कि इट इज ट्राई टू लोकेट दिस एलिमेंट. ये जो एलिमेंट है ना आपका, ये लोकेट करने का ट्राई करता है. बट उस टाइम पे आपका पेज लोड जो होता है ना कंप्लीट वो नहीं होता है. सो इट विल डायरेक्टली शो यू एज एरर लाइक नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा ट्राई करता है. ओके, इफ यू विल ट्राई विद अदर टाइप ऑफ लोकेटर स्टिल इट विल गिव द सेम एरर. व्हाई? बिकॉज जब तक ये आपका यूआरएल लोड हो रहा है एज पर लाइन नंबर 13, उस लोड होने के चांसेस में ही वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू लोकेट द नेक्स्ट एलिमेंट विच वी वांट टू परफॉर्म एक्शन. जैसे हमको यूजर नेम में एडमिन पुट करना था, तो इट विल ट्राई टू रन और द नेक्स्ट थ्रेड लाइन नंबर 17. इफ यू विल नॉट गिव एनी थ्रेड स्लिप, अगर आप उसको थ्रेड स्लिप कुछ पॉज देते हो फॉर सम टाइम, it will not throw you an error. It will easily locate that element and it will provide this keys, means input also. Okay. Now, as soon as we are giving the thread.slip, we should give the throws exception as well, right? जैसे आप ये without throws exception लिखते हो तो यहाँ पे आपको error आएगा. So that's to avoid that error, we are just saying it throws exception, so it will not give an exception, runtime exception for this thread.slip. Okay. यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? If you are getting no such element found, so try to give some stop. Okay, some pause to that execution by giving thread dot sleep and a comfortable time. Okay, like 4 second, 5 second. Okay, actually these are the millisecond, but 5000 millisecond means 5 seconds. Is it fine with all? Yes, Yes, sir. no. Okay. स्टिल अगेन देयर आर सम वेट स्टेटमेंट. देखो ये भी एक टाइप का स्टेटमेंट है जो आपका एग्जीक्यूशन पॉज करता है. अगेन इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी सम वेट स्टेटमेंट. मतलब मान लीजिए कि आपका जो एलिमेंट आपको चाहिए एक्शन करने के लिए वो लोड होने के लिए काफी टाइम ले रहा है. इट्स लाइक टेकिंग 2 मिनट टाइम.
so you cannot give that much time to pause, right? So वहाँ पे एक दो टाइप के वेट होते हैं, implicit weight और explicit weight, that I will show you, okay, when we are going to deal with that type of weight statement. Okay, as of now we are just trying to give thread dot slip and the appropriate time to pause the execution. Okay, now अब ये इस कोड में हमने क्या किया है, देखिए, that is first step launching the browser, then hitting the URL, then we are trying to get the title and verify it, right? वो हमको पता है, like actual result और expected result के साथ हमको उसको compare करना है. Okay, same, then we are giving some password. Okay, we are trying to give the password, we are hitting the login button. Again, after getting logged in, whatever the page we are trying to get its title, again verification of the title, and then log out. Okay, I will just try to run this. See, last statement of my code is I should get a message log out done. Okay, so we'll try to run this. Okay, just see carefully. And now this time I have given thread dot sleep after each statement, at least where I'm taking some action like find element मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं appropriate time दे रहा हूँ एक. Okay, just to pause the execution or to load that element. So we'll try with this execution. Again same, run as Java application. So it will launch the browser. It will enter the username. Okay, it will enter password, hit the login button, and simply it will hit to log out and close the session or close the browser, we can say. Okay, now see, after this we can just go to console and check we have given the last statement as logout done. Okay, so it's executed completely, whatever the code. After this code, whatever the error you are getting, just neglect it. Okay, it's not with the execution part. यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? No, sir. Okay. Okay. Now we'll discuss one concept today, that is, just listen carefully. Okay. So this is the application we are dealing, right? What we are doing here, we are giving the username, giving the password, click on the login button. Okay. Now see, while doing the logout, what we were doing, हम यहाँ पे जा रहे हैं, we are clicking on this and then moving your cursor to logout button. Yes or no? Yes, sir. Yes, Are you sir. moving your cursor to logout button? Okay. Okay, so for that also, okay, for example, for that also we have one method, move to element. Move to element. This is one method which we have to use. ये method आपकी क्या करेगी? It will move your cursor to the given element. Okay, देखिए, अब यहाँ पे जब हम execution कर रहे थे with this code, did you find your cursor was moving to any element? While executing this code, No, sir. did you find your cursor is moving to the different element? Now see where is the cursor, okay? And in your execution window also, you just see carefully. Did you get any chance to look like your cursor is moving? Is that the cursor is going to the username? His cursor is going to password? His cursor is going to login? Is it?
No, No, sir. sir. No, right? Okay. Yes, sir. Even for logout also you can see, right? You cannot see the cursor is moving to the drop down and then log out and then log out and then clicking on logout, right? Okay. Logout done. Okay. Last sentence we are getting that logout done. Okay. Here you can check. Okay. So same way, I want to move the element, move my cursor to a particular element. So for that reason, we have to use move to element method. Okay. Okay. What is the meaning of method? Like what? Why we are using any method? Perform some action. Perform some action. Very good. Okay. So my aim is to perform this action. Okay. 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 So we'll again go back to the code. Okay. Yeah. In this code, last time, here we have tried the data in terms of data type or variables. Here, this type of data is hard coded, right? You can see. Yes, sir. Okay. So if you want to provide the data in terms of data type, what we have done? क्या किया था हमने? वेरिएबल यूज किया था. Variable. Okay. Okay. Now just consider ये जो URL है आपका, whatever the URL here, इसके लिए मुझे एक data type create करना है. Okay. So tell me where I need to create the data type and how. We can put it into the string. Okay, string. But where to create the data type? It in class, right? Yes, sir. Okay. Data type you are saying string. Okay. Variable I can give like simple URL is equal to, in double quote we are giving the value. Right? Yes, sir. Okay. Is it string? It is string or it's not a string? It's a string. Okay. 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 So now what changes you want me to do here in line number 14? Put the variable name. URL. Okay. What is the variable name? URL. Okay. URL. Here you are saying, right? Navigate to URL. Okay. We are getting an error, right? Yes. What is the error? It's a non-static member. Mm-hmm. Okay, which type of variable is this? Global variable. Okay. Is it global variable or instance variable? Instance variable. What is the difference between instance and local? Global? We have to create object for instance variable. Okay. Why? Because see, this data is outside the main method, right? So outside any method, if we are defining in data, it become instance, right? We cannot directly call out the instance variable. So what we are trying to add a word static. See, if I make it static, I can use in static method. Main is your static method, right? So I can directly use that data into the main method, right? This time I'm not getting an error. So this is again one type of data giving method, like input data. Second method we have tried, right? This passing the data from the variable. So it is also okay, right? Are you getting why we are putting the static keyword? Any doubt in this? No, sir. Okay, chalo. So here in this step,
after clicking on the logout, then we are after clicking on that drop down, we are trying to move our cursor to that logout button. So we'll go to that step directly. Okay, for here. Okay, okay, yeah, see the line number 42. In line number 42, it is trying to click on that drop down. You can see drop down icon, and we are just clicking and taking some pause, and our like driver element we are finding as a logout, and then we are clicking on that button, right? Logout button, or that option. But if I want to perform this action with the help of move to element, how should I get it? Okay, so as of now, for this line number 45, I will comment it. Okay, I will comment it. Now what is my method? Move to element, right? Move to element. So I will try to make it driver dot move. I'm not getting that method. What is the reason? What is the reason? You might have not import the file. Might not. Import the jar file. The jar file. But jar file we have imported, right? You are saying Selenium jar file or with jar file? Sir, the import method which we use above the class. Okay. Here you are saying, right? Yes, sir. Okay. So which like package we have to import? So that I don't know. Okay. Don't get worried. Okay. See, simple concept. If we want to deal with methods, so what we have to do? We have to access class. You remember? If we want to use any method, it will be in class. If we want to access a class, it will be in what? Package. Package. Don't forget this concept, okay? We are dealing with this concept throughout the Selenium. Okay. So method is move to element. Move to element. This method is present in which class? Actions class. Now see, as I told you previously, like Selenium guys have developed all the predefined methods. अब हमको जितने भी एक्शन करने हैं ना, उन सभी के पहले ही predefined method बन चुके हैं. It's not like we are going to create our own method in terms of action we required. Click के लिए हम कुछ own method नहीं बनाएंगे. It's already developed. Okay, it's already there, which is created by the Java or Selenium guys. Just we need to go to that particular method. उसके लिए हमको पता होना चाहिए किस क्लास में है और उस क्लास को यूज करने के लिए कौन सा पैकेज चाहिए. Then which package I should use. So definitely I will need a package to access the particular class. So that's why you need to import. Import is a keyword, okay? It's not a package name. Import, that is org dot open qa dot selenium dot interactions dot class name is actions. Okay, this is the what? Sorry. Selenium. Okay, we have to import that package. Now if you will import that package, automatically it will contain the action class, and whatever the method from the action class, we can use it. And in that action class we are having move to element as the one of the method. Is it okay?
Yes, sir. Okay. Now we'll do that same concept. Okay. Here, here I'm going to import that. Okay. So import org dot openqa dot selenium dot interactions actions dot actions. You can see, right, actions, and see we are getting at a class. We have to use the action class, so just double click on it. It will import that necessary package. Okay. Now come back to that code where we want to make this. Okay. Now we want to use that method. So driver dot move. Still I'm not getting that method. What is the reason? What is the reason, guys? What is the reason? See, we have imported this package. Now what is the reason we cannot acquire or we cannot get access to this particular method? Why? Why you are forgetting the concept, guys? See, we want to use any method. What we will take with the take help of class. Exactly हम क्या करते, क्लास का हेल्प लेना है, मतलब मेथड और क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. we have to create the object, right? यस सर. So why you are forgetting the basics? Actions, that is the class name, any variable name which we want to give, the new keyword, and same actions. Okay, this is syntax to create an object, but here we are performing all our actions with respect to driver, right? Web driver. So here as an input we have to give driver as an input to that particular object. Okay, we have to give driver as an input. Okay, because see, at the end we are doing all our activity with respect to driver, right? So same we will try to do here. We are not going to call that method by using driver object, right? We have to create object of that class. Okay, so what is the class name? Actions, any variable name which you want to give is equal to new keyword, again the same action class name. Inside the bracket inside the bracket I am giving driver, which is the object we have created. यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? How we have imported, how we have created the object for the action class? नो सर. No. Now with that created object, act just dot and just click on move to element. We can find that method, right? Second method, move to element. Just clicking on this. Now it will need one argument. देखिए, move to element, but किस एलिमेंट को मूव करना है वो हमने उसको नहीं बताया, right? It will definitely move to the element, but we have to give the target web element. See, we have to give the target web element जहाँ पे उसको move करना है. So how to provide that target web element? How to find the element? लोकेटर. Locators. तो अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे फिर? What should I write here? Find element. Driver dot find element. Yeah, we have to use the driver object again, because see, finding element is done by the driver object. So driver dot find element, right? You are getting find element by. Now here again we have to use keyword by. Now whatever the
locators we want to use. Okay, for example, in this we have used which type of this? ये क्या है exactly? Can you tell me which type of locator is Tags, this? tag name. Attribute. Ta attribute. Okay, is it attribute, my dear? Is it attribute? Is it single attribute or multiple attribute? Single attribute. Are you confident? Is it I'm using here the X path with single attribute? Yes, sir. Okay, what is the syntax for the single attribute or multiple attribute? Hmm? You Tag should name not is forget. missing. Tag name is missing. Okay, very good. Okay, we'll do that thing. See, logout, right? I want to use the logout. So, right click on it, inspect. I'm getting that code for logout. Okay. Control find. Here I'm putting that path which we have written. Is it going to locate that element? Yes, sir. Yeah, you are getting one by one. Now tell me which type of this path or locator? Hmm? Why you are like forgetting the concept? यही आपको difficult बना देगा automation है ना? At the end. Yes. Tell me. Partial आपके लिए link test. partial link text. Okay, very good. Have you seen that X path with text attribute? Yes, You are sir. saying attribute, add the attribute name. This one dear, single attribute. उसको at the rate use कर रहा हूँ मैं. I am using at the rate. No, I am simply using text. So it's a text attribute, right? यहाँ पे at the rate नहीं लगता है. Same, I am doing the same here. I have not used the at the rate. See, your aim is at the end to find that element in whatever way. But इंटरव्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये मैंने लिखा है ये एग्जैक्टली क्या है सो यू शुड बी अवेयर विद द सिंटैक्स एंड व्हाट एग्जैक्टली द लोकेटर्स दे आर यूजिंग आप उनको ये भी बोल सकते हो कि ओके इफ आई एम नॉट गेटिंग दिस आई कैन ट्राई विद अदर बट ऐसा आंसर उनको एक्सपेक्टेड नहीं था यू शुड बी एबल टू गेट वॉट एवर द टाइप ऑफ लोकेटर दे हैव रिटन यू शुड बी एबल टू गिव क्लियर आइडिया कि ये कौन से टाइप का लोकेटर है ओके नाउ अगेन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट कंसेप्ट here find by okay tell me what should I type here by x path again we have to give that path so I am pasting that path here okay now it is moving to that particular target element for example it is moving to that particular target element. After that we have to use one method that is called as a perform. Okay, it is going to perform an action on that element. Okay, see whenever we are trying to move to element after that element we have to use the perform action. Okay, now I am going to use the perform action. Now simply after getting moved to that particular target element है ना like cursor is moving to that element and it is trying to perform an action. So here there is no error in code. Now what this line number 47 is indicating, the cursor after clicking on the drop down cursor will move to this logout button and perform an action. मतलब logout होना चाहिए right simply. We cannot put here click. Okay, if you are saying कि सर हमने डॉट के बाद उस पर क्लिक क्यों नहीं किया so when we are trying to move to element the action whatever the action required it is going to perform by this perform method. Okay, see finding that element and just clicking like giving input is a different concept. Here we are trying to move to that element, right? The cursor will go to that element and then perform
the required action. So dot perform that instruction I'm giving here. Okay. Next, it will again stop or pause for some time, 3 seconds, and then it will close the session. And at the end we should get the this one. So after this, again just for our sake, I am typing one message. माउस, इसको कहते हैं हम माउस ओवर. ओके, द कंसेप्ट mouse over completed. Okay, mouse over completed. Like we are moving our cursor to a particular element, that is called as mouse over or hover over. उसको दोनों concept बोलते हैं. Okay, so is it okay with this? यहाँ तक किसी को doubt है? What we have added from line number 46 to 49. Just let me know if you have any doubt before executing the code. Yes, no. No, sir. Okay, we will try to run Sir? that code. Yeah, बोलिए. So हम लोग क्लिक मेथड यूज नहीं करेंगे क्या? Click method हमने, okay, I will show you that also. By using click method also I will show you. Okay, what exactly we are getting. Okay, as of now just understand कि if we are trying to move to element, we will try to give a perform action. Okay, okay, Okay sir. yeah, as of now I will run this. So as usual it will try to log in by launching the browser. देखिए यहाँ पे हमने जो वेरिफिकेशन लिखा था ना, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है. Anyone, you will not see the cursor is moving to that required or target element. It will not happen. Okay, because your browser is handled by the automated test software. Okay, now see, we are getting the last statement, logout done, mouse over completed. Okay, we will try with the click action you are saying, right? Okay, but the difference is, even though if you will use the click action, it may work. Why? Because it is again one of the method, right? Standard Selenium method. But when we are trying to move element, right, हम जब cursor पे move करते हैं, तब उसको जो action कर रहा है वो directly it is getting from the perform method. Okay, otherwise find element and then dot click उसमें और move to element and dot perform में कोई difference नहीं रहेगा. Okay, even we can try to click, but generally आप जितने भी code देखोगे in future, with use of move to element we are trying to perform an action. Okay, because see in future वो element आपका checkbox भी हो सकता है और it may be some drag and drop. उस element पे जाके आपको उसको drag करना पड़ेगा. Then we cannot use just click action, right? This action may vary in future. अब यहाँ पर वो एलिमेंट सिंपल एक एलिमेंट है जिसपे आप क्लिक करना चाहते हो. ओके, बट योर एक्शन में बी लाइक ड्रॉप एंड ड्रैग. ओके, और जस्ट होल्ड इट, और स्क्रॉल भी हो सकता है उस एलिमेंट पे कि आपको स्क्रॉल करना है, राइट? बैकवर्ड लाइक फॉरवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड स्क्रॉल करना है, तब आप क्लिक एक्शन नहीं यूज कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सिंपली यूजिंग परफॉर्म. अब यहाँ पे आपको पता है कि उस एलिमेंट पे हमने क्लिक ही किया था. व्हाई? बिकॉज यू हैव ट्राइड प्रीवियसली. आपकी कोड में आपने ट्राई किया, कहते हैं लॉग आउट के लिए लॉग आउट बटन पे डॉट क्लिक करना था. ओके, बट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द एलिमेंट टाइप, मतलब वट एवर द एक्शन इट इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट, उस टाइम आपको परफॉर्म यूज करना है. ओके, इज इट फाइन विद दिस डाउट एज वेल? ओके सर, है ना? देखिए समटाइम्स like you need to
होल्ड दैट एलिमेंट एंड देन ड्रैग, ऐसा हो सकता है, या वो चेक बॉक्स हो सकता है, उसको बस आइदर साइड पे क्लिक करना होगा आपको, येस नो। सो वी आर नॉट श्योर। अब यहाँ पे आपको पता था कि आपको ड्रॉप डाउन पे बस यहाँ पे क्लिक करना है, राइट? So if the button type or that element type is different, it's not accepting this click activity, that time you can go and just give the perform action. वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, okay? In future if you are getting that type of element, instead of clicking we have to use some other action, we are free to use that. यहाँ तक कोई डाउट है? सर बट वो माउस नहीं गया कर्सर वहाँ पे लॉक That's what I'm saying, right? During execution you cannot see that. Your cursor you cannot see it is going to move that. बस मैंने ये स्टेप क्यों दिखाया आपको? Sometimes आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस PIM, ये एलिमेंट जैसे आप माउस ओवर करते हो तो इट इज गोइंग टू हाईलाइट समथिंग और इट इज गिविंग सम ऑप्शंस, प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं. फॉर दैट ओनली वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, ओके? और कर्सर आपको तो कोई भी एग्जीक्यूशन में कभी भी मूव होता नहीं दिखेगा. जस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग मैन्युअली एंड फाइंडिंग द एलिमेंट एंड क्लिकिंग, मैंने यहाँ पे आपको बस बताया कि स्टेप यहाँ तक आप क्लिक कर रहे हो एंड देन यू आर जस्ट ट्राइंग टू माउस ओवर, आपका कर्सर आप मूव कर रहे हो लॉग आउट को और उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो. बट इन एनी ऑफ योर एग्जीक्यूशन ऑन द Selenium, you will not see the movement of your cursor, okay? That is a sure thing. That's why I ask in first execution, आपको कर्सर कभी भी मूव होते नहीं दिखेगा. That directly you can see the actions performed, but not with the respect of cursor. कर्सर आपका नहीं मूव होगा. बट सर फाइंड एलिमेंट और मूव टू एलिमेंट में डिफरेंस क्या रहेगा? वही तो बोल रहा हूँ, मूव एलिमेंट आपको एक कब बोलते हैं? व्हेन वी आर नॉट ट्राइंग टू यूज द माउस एक्शंस. ये जो है ना मूव, ये एक्शन क्लास, इसमें हम जितने भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, दीज आर लाइक नॉट यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड लाइक दैट, ओके? जैसे आप ड्रॉप डाउन, ये सब वैल्यू आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, राइट? शिफ्ट, आप उस एलिमेंट पे जाओगे, शिफ्ट दबा के, और वहां से आप ड्रॉप डाउन में अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो करोगे. सो डिफरेंस यहाँ पे वैसे मेजर कुछ नहीं है फाइंड एलिमेंट और मूव टू एलिमेंट में. बट यहाँ पे जो कर्सर मूव होता है, देखो फाइंड एलिमेंट में मैंने आपको कभी नहीं बताया कि कर्सर मूव हो रहा है. Is it I have told you like during find element it is No. trying to move the cursor? No, right? आपने डाउट भी पूछा था, if you remember, कि सर हम पहले तो एक्शन करते हैं, क्लिक एक्शन करते हैं. You remember you asked me doubt कि सर यूजर नेम पे तो हम पहले क्लिक एक्शन करते हैं, then we are trying to give the value. बट Selenium में यही खासियत है कि इट्स नॉट लाइक कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस कि आप क्लिक करोगे फिर इनपुट दे रहे हो. इट इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट एलिमेंट, और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इफ इट इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट द इनपुट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, वो डायरेक्टली सेंड कीज ऑपरेशन से उसको इनपुट दे देगा, ओके? सो यहाँ पे हम जो आप भी बोल रहे हो ना, यहाँ से अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी कुछ एक्शन, उसके लिए भी कुछ कोड लिखना होगा कि नहीं लिखा था हमने. वी आर जस्ट फाइंडिंग दैट एलिमेंट एंड क्लिकिंग ऑन दैट. बट अगर हमको माउस ओवर करना है, मतलब फ्रॉम द गिवन ऑपरेशन द कर्सर इज मूविंग टू दैट एलिमेंट, तो उसके लिए अल्टरनेट एक है कि यू कैन जस्ट मूव टू दैट टारगेट एलिमेंट. अगेन द सेम एक्शन वी हैव परफॉर्म विद सिंपल फाइंड एलिमेंट भी किया था हमने, यही है वो लाइन नंबर 45 में, राइट? यस सर. सो नो डिफरेंस बिटवीन दिस. जस्ट अगर आपको किसी ने कहा कि मुझे ये एक्शन मूव टू एलिमेंट से करनी है, तो यू शुड बी राइटिंग दिस मच कोड एटलीस्ट टू एक्सप्लेन दिस. और डायरेक्टली ये कोड नहीं लिखोगे आप. अगेन इज ट्राइंग टू गेट योर कंसेप्ट फ्रॉम दिस कि हाउ यू कैन कैच दैट मेथड. तो आपको बताना चाहिए कि वो किस क्लास में प्रेजेंट है, एक्शन क्लास में, और उसके लिए रिक्वायर्ड जो पैकेज है वो आपको पता होना चाहिए. Now this is the skill of coding, right? One can do without importing this, one can do with importing the action class and using the move to method. तो आपके कोड में अगर आपको देखिए लॉग आउट के लिए अगर ये कंसेप्ट दिखाई दे रहा था, तो यू शुड नॉट फील सरप्राइज कि ये कैसे आया. आई वॉज जस्ट यूजिंग फाइंड एलिमेंट एंड जस्ट क्लिक मेथड. देखो दोनों मेथड सही है, मैंने यही कोड आपको 45 और 44 की लाइन से भी क्रिएट करके दिखाया, मतलब रन करके दिखाया. एंड सेम वी आर डूइंग विद दिस move to element as well. Got it? यस सर.
ये कंसेप्ट कब आएंगे आपको, जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो और वहाँ पे कुछ ऑलरेडी डेवलप्ड कोड है ना, सेलिनियम कोड है, एंड यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, और पार्शियली आप कुछ डेवलप भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि प्रीवियस जो भी टेस्टर था उसने एक्शन क्लास से वहाँ पे ये एक्शन की थी, सो यू शुड बी नॉट गेट वरीड कि ये एग्जैक्टली क्या है, एंड यू शुड नॉट लाइक कमेंट दैट कोड एंड राइट योर ओन कोड. If it is running successful, you should just understand exactly वहाँ पे concept क्या था, and that is what the move to element. Okay? यहाँ तक कोई डाउट है? सर ऐसे कोई एलिमेंट है क्या कि वहाँ पे कंपलसरी हमें मूव टू एलिमेंट ही यूज करना पड़ेगा? नहीं. There is no compulsion. There is no any compulsion. ओके सर. There is no any compulsion. है ना? There is no compulsion. See, मान लीजिए अगर आप find element से नहीं कर पा रहे हो, okay, and even you are trying to give the pause also, आपने thread dot sleep भी provide किया, still वो action नहीं perform हो रही है, so as a second option you can go with this action class move to element. ओके सर. Okay, that is your skill of automation or like coding, कि आपको alternate way ढूंढने पड़ेंगे. जैसे एक locator से काम नहीं हो रहा है, so you cannot say I will stop the execution. You should go and find with other locator. देखो दोनों का एम वही है, just we are trying to log out, but the code is different, right? यस. Partial code is different, not complete. Partial action जो है वो बस अलग है. Okay? So I think इसमें कोई डाउट है again? Move to element. नो सर. Okay. So अब तक हमने क्या क्या देखा है from starting the selenium? Simply, if we'll make out the list, first we have seen the login. Okay, simply login. Then find element and give the input, right? Find element in terms of in terms of text box, button, है ना, different button भी देखे हमने, and link also. Link is what, जो log out करते हैं वो link है अपनी, है ना, drop down में जाके 4 link मिलते हैं आपको. Then we have used the verify, है ना, verify हमने किया है, like user is going to land on correct page or not by using if else condition. Then we have using the test data. Test data हमने use किया, right? Like instead of hard coding we are providing in terms of the particular data, वो था string, and this we have used as the MouseOver, और इसको ही बोलते हैं हम move to element. Okay, so see, one by one ही ऐसे concept build होंगे, and then only you can get the complete idea about automation, है ना. So what I'm expecting कि आप क्या कर रहे हो बैकएंड में, एटलीस्ट सिंपल टेस्ट केस लिख रहे हो जहाँ पे आपको फाइंड एलिमेंट करना है और क्या करना है, क्लिक करना है और कुछ एक्शन करनी है. ऐसे आपने कुछ मैनुअल टेस्ट केस लिखे होंगे, तो यू जस्ट गो एंड ट्राई टू ऑटोमेट देम. ओके, ऐसा मत कीजिए कि हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं वही बस आप एग्जीक्यूट करके देख रहे हो. ट्राई टू क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट and try to run it. Otherwise एक टेस्ट केस से ऑटोमेशन नहीं होता है, right? We have seen what is the regression suite we have prepared, that we have to automate. Okay, now the new concept, just listen carefully. Okay, now see this element like assigned leave list, time sheet. These are the options. Okay, just right click on it and see its inspect, like उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम exactly वो क्या है. Okay, so we are getting this property. Okay, no worries. Now there is again one element like select an element in the page to inspect. इस पे हम क्लिक करते तो इंडिविजुअल एलिमेंट का वो क्या दिखाएगा, HTML कोड हाइलाइट दिखाएगा. Okay, now where is that? Okay, here. Okay, this is okay.
Okay. Okay. Now see, we are getting, we have clicked on that leave option, right? Leave list. Okay. And we are getting again one more page open, and this is its HTML code or HTML structure. Can you see there is a one word iframe? Yes, sir. Okay. Now this is the concept. Okay. What is iframe? What is iframe? It's simple. We are having one web page. We are having one web page in different web page. ओके, वेब पेज इन वेब पेज सिंपल याद रखिए. ओके, देखिए एक ये डिफरेंट वेब पेज है अब, और जो प्रीवियस था सिंपल दैट वाज अ डिफरेंट वेब पेज. मतलब उस पर क्लिक करने के बाद वी आर गेटिंग सम न्यू वेब पेज दैट इज कॉल्ड एज आई फ्रेम. नाउ इंटरव्यू में क्वेश्चन यही होते हैं कि हाउ टू हैंडल आई फ्रेम, हाउ वी कैन लोकेट द एलिमेंट्स ऑन आई फ्रेम. अब इसके जो एलिमेंट आप लोकेट करना चाहोगे जो भी है, लाइक अप्रूव, दिस रिजेक्ट, जो भी बटन्स है, इसको हम डायरेक्टली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से नहीं लोकेट कर पाते. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. फर्स्ट मैंने क्या कहा कि आपने एक ऑप्शन पे क्लिक किया, वी आर गेटिंग न्यू पेज. ओके, अब उस न्यू पेज पे भी आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है. वी हैव टू चेक कि अप्रूव बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं, रिजेक्ट बटन हो रहा है कि नहीं, व्हाट इज द थ्री डॉट ऑप्शन, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस. अब यहाँ पे आपको जो टेस्ट करना है तो अल्टीमेटली आपको एम होगा कि वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एनीथिंग एंड अप्रूव. इस बटन को फाइंड करना है, रिजेक्ट बटन को फाइंड करना है, इस थ्री डॉट को फाइंड करना है, राइट. बट यू विल नॉट गेट इट जस्ट बाय यूजिंग ड्राइवर. आप सिंपल कोडिंग से जाओगे तो वो नहीं होगा. वाई? बिकॉज आपके सेलिम को ये नहीं पता है कि आपने डिफरेंट वेब पेज में एंटर कर दिया है. आपने डिफरेंट वेब पेज पे एंटर किया है, वो सेलिम को पता नहीं चलेगा, बिकॉज सेलिम इज नॉट अवेयर अबाउट द आई फ्रेम. सो आपको सेलिम को ये पहले बताना होगा कि आई एम ट्राइंग टू स्विच टू द डिफरेंट आई फ्रेम, है ना. अब ये एक वेब पेज मतलब क्या हो जाता है, एक फ्रेम हो जाता है सेलिम के कंसेप्ट में. तो आपको सेलिम को पहले ये बताना होगा थ्रू कोडिंग कि मैं एक अलग आई फ्रेम पे स्विच हो रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्विच ऑन द डिफरेंट आई फ्रेम, एंड देन इन दैट आई फ्रेम आई वांट टू यूज और आई वांट टू यूज सम एलिमेंट टू परफॉर्म सम एक्शन, है ना. ये जो एलिमेंट है ये नॉर्मल वेब पेज पे नहीं है, ये आई फ्रेम में है. दो इट लुक लाइक नॉर्मल वेब पेज, बट फॉर सेलेनियम इट्स नॉट अ सिंपल वेब पेज, इट्स कॉल्ड एज आई फ्रेम. उस आई फ्रेम पे जाके वो क्या करेंगे, परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर एक्शन. कंसेप्ट समझ में आ रहा है एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू. हमारे लिए ये नॉर्मल एक वेब पेज है, बट फॉर सेलेनियम इट्स नॉट अ सिंपल वेब पेज. आपने क्या किया है, आपने किस ऑप्शन पे क्लिक किया है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लिक्ड ऑन दैट ऑप्शन, राइट, दिस ऑप्शन, और देखिए डिफरेंट वेब पेज ओपन होगा. सो अगेन डिफरेंट वेब पेज वी कैन से, बिकॉज इसका यूआरएल चेंज होता है जस्ट लाइक स्लैश स्लैश व्यू लिस्ट लिस्ट, राइट, व्यू लिव लिस्ट. तो सेलेनियम को ये नहीं पता चलेगा कि आपने डिफरेंट वेब पेज पे एंट्री किया है. दो फॉर अस इट्स सिंपल, लाइक हम मैनुअल जब करेंगे तो हम सिंपल चेक करेंगे सर्च बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं, रिसेट बटन हो रहा है कि नहीं, ड्रॉप डाउन इज वर्किंग फाइन और नॉट, दिस अगेन दिस ड्रॉप डाउन इज वर्किंग फाइन और नॉट, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डेट और नॉट. ये तो हमारा सिंपल वैलिडेशन नेक्स्ट होगा. बट सेलेनियम को पहले ये बोलना पड़ेगा हमको कि वी हैव स्विच्ड टू डिफरेंट आई फ्रेम. सेलेनियम के लिए एक आई फ्रेम है, फॉर सेलेनियम इट्स आई फ्रेम. और फिर इस आई फ्रेम में स्विच होने के बाद आपको पर्टिकुलर एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. बट सिंपली आप विदाउट स्विचिंग एनी आई फ्रेम आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से करोगे तो ये एलिमेंट नहीं फाइंड होगा, और यू विल गेट एन एरर कि आप एग्जैक्टली किस एलिमेंट की बात कर रहे हो और एग्जैक्टली किस एक्शन की बात कर रहे हो. गॉट इट? Yes or no, guys? Yes, sir. Okay.
So the next concept is the iframe. So how we will handle the iframe? Yes, iframe में किसी को डाउट है? No, sir. Okay. Okay. Now how देखिए यहाँ पे हमारा एम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, if we are getting any question how to handle the iframe using Selenium WebDriver, so सबसे पहले आपको एक बोलना होगा कि iframe is nothing but displaying a web page which is a part of another web page, है ना? displaying a web page which is a part of another web page, उसको हम कहते हैं iframe. और iframe है या नहीं ये हम कैसे पहचानेंगे? How to identify it? How to identify it? By the name iframe. iframe कहाँ पे होना चाहिए? आपके HTML में होना चाहिए. Okay. Again, just go here. I will show you. Okay. So see, different web page is open, and we should get that iframe. Wait. Wait, I just want to show you that HTML code. Okay, this one. Okay. See, what is this after this less than symbol? जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? Tag. What is this tag? Tag name. This is the opening tag. This is the closing tag. Closing tag होता है forward slash and again the tag name enclosed in less than and greater the symbol. तो जब आपको iframe ऐसा tag name दिखाई देगा, I'm not saying in meanwhile, okay, बीच में कहीं नहीं चाहिए. Tag name अगर आपको है तो you should be very clear कि we are working with the iframe, okay? And iframe को आपको करना पड़ता है handle, okay? We have to handle that iframe. So first we have to change our focus from main page to that iframe. Otherwise Selenium को ये पता नहीं चलेगा कि आप main page की बात कर रहे हो कि iframe की बात कर रहे हो. So for that we have to use method like driver dot switch to, where we'll have this operation also. Switch to, it's a function or it's a method. Switch to dot frame. Switch to dot frame. अब वो कौन सी फ्रेम को कैसे लोकेट करना है? फर्स्ट वी हैव टू लोकेट द फ्रेम आल्सो, तभी हम बता पाएंगे कि मैं इस फ्रेम की बात कर रहा हूँ. ओके, सो वॉट एवर द फ्रेम, हाउ टू लोकेट दैट फ्रेम, दैट वी विल डिस्कस थ्रू आउट द कोड. ओके, बट जब फिर हम उस फ्रेम को लोकेट करेंगे और स्विच हो जाएंगे, देन अगेन नॉर्मल ऑपरेशन, क्लिक, सेंड कीज, वॉट एवर द ऑपरेशन इट इज. बट व्हाट द टेक केयर वी हैव टू टेक कि अगर वहां पे आई फ्रेम है तो उसको पहले हमको अपना सेलेनियम का फोकस स्विच करना पड़ेगा उस फ्रेम पे, देन ओनली वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन. अदरवाइज सिंपली आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से करोगे स्कीपिंग दिस, इट विल नॉट आइडेंटिफाई कि आप उस फ्रेम पे हो कि आप किसी अलग वेब पेज की बात कर रहे हो. ओके, देन ऐसा हो सकता है कि आपने उस फ्रेम में कुछ एक्टिविटी की और आपको बैक जाना है. ओके, इफ यू वांट टू गो बैक टू द फ्रेम जहां से हम आए थे, उसको हम कहते हैं पेरेंट फ्रेम. ओके, और जिस फ्रेम पे अब हम है क्लिक करने के बाद इट्स कॉल्ड एज अ चाइल्ड फ्रेम. सो इन दोनों में कैसे ट्रांजैक्शन होता है
और हाउ वी आर डीलिंग विद पेरेंट फ्रेम चाइल्ड फ्रेम, जैसे मान लीजिए इस केस में, ओके, लाइक हियर वी आर एट, फॉर एग्जांपल, वेट, सी इफ आई क्लिक ऑन दिस आई विल बी इन चाइल्ड फ्रेम, अब ये चाइल्ड फ्रेम है, ओके। अगेन आई वांट टू कम बैक to the parent frame and again I have to do some different, I want to enter in different time frame, तो वो कैसे करेंगे हम? अगेन हमको पेरेंट फ्रेम पे आना है और इस पे आना है। अब देखिए ये मैन्युअली जैसे मैंने यहाँ से बैक किया, राइट, सो ये बैक मैन्युअली करना और ऑटोमेशन से करना ये अलग थिंग होता है, बट डायरेक्टली विदाउट क्लिकिंग ऑन दिस बैक थ्रू ऑटोमेशन आई कैन यूज और आई कैन कम टू दी पेरेंट फ्रेम, जो पेरेंट फ्रेम है ये, इस पे मैं आ सकता हूँ, ओके। आई डोंट नीड टू क्लिक ऑन दिस बैक बटन। अगेन इफ यू ट्राई टू फाइंड एलिमेंट, ये फाइंड एलिमेंट करना चाहोगे, बैक बटन करोगे तो नहीं होगा, जस्ट थ्रू कोड ओनली। मैं अगेन आऊंगा पेरेंट फ्रेम में, अगेन चाइल्ड फ्रेम में, आई विल डू दिस ट्रांजेक्शन फॉर 2 और 1 टू टाइम, जस्ट टू गेट कि हम स्विच कैसे करते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट एटलीस्ट? क्योंकि डायरेक्टली कोड बताऊंगा ना तो ये समझ नहीं आता है कि हम करना क्या चाहते हैं, बट मैन्युअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्विच द फ्रेम, और फ्रेम का मतलब होता है कि वेब पेज के अंदर वेब पेज होना, सिंपल, लाइक डिस्प्लेइंग अ वेब पेज विच इज अ पार्ट ऑफ अनदर वेब पेज। आई होप डाउट इज क्लियर, राइट? यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? Yes, sir. ओके, नाउ वी हैव सीन दीज at least concept, right? Element, verify, like verification, different test data and mouse over. I hope आप इनकी प्रैक्टिस सेम कोड के साथ भी कर रहे हो, जो भी मैं कोड शेयर करता हूँ, राइट, उस कोड के साथ भी कीजिए, और राइट डाउन योर ओन कोड विदाउट दीज इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखे ना, ये इंस्ट्रक्शन मत लिखिए आप, ओके, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आपके स्टेडियम में और आपके इक्लिप्स में एक कोड होना चाहिए ये, जो मैंने बैच में दिया है, और एक पैकेज में होना चाहिए आपकी ओन प्रैक्टिस, जिसमें आपने ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू रन द कोड, ओके। देन अगेन आपका लोकेशन वेरी होगा प्रॉपर्टीज में, अगेन योर कंसेप्ट विल बी वैलिड। आप वेरीफाई कर रहे हो तो वहां पे मत लिखिए कि आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई, ओके। Is it okay with the practice? Okay, if you want, you are not clear with the steps, आप उसी टेस्ट केस के टॉप में कहीं तो स्टेप लिख रही है, by commenting the code. By commenting the code, you can just write down the steps. Okay? Again, comment के लिए आपको पता है how to comment the particular code, पता है ना आपको? और your कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश फॉर सिंगल लाइन, और आपको ग्रुप ऑफ लाइन करना है तब क्या करना पड़ता है? आई थिंक फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार, यहाँ से लेके तो आपको जहां तक करना है वहां तक आप उसको क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सॉरी, लाइक दिस, ओके। जैसे आपके पूरे स्टेप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल टेस्ट के स्टेप 1 2 3 आप डायरेक्ट लिखिए विदाउट यूजिंग डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो वो पूरे लेंथ को क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। इट इज ऑल्सो वन टाइप, और फॉर सिंगल लाइन आप उसको डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हो। इज इट फाइन विथ ऑल? Yes, sir. Okay, tomorrow also we will have session, okay? Tomorrow also on Saturday we will have session at same time 7 to 8, okay? अगर कोई डाउट नहीं तो we can stop here. Any doubt? कोई डाउट है किसी को? Okay, yeah, we'll stop here, okay? Thank you. सर हाँ बोलिए। सर आज का कोड सर शेयर कीजिए। कोड, या डेफिनेटली, लास्ट टाइम मैंने वो हमने किया नहीं था ना एग्जीक्यूट, इसलिए आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड
and I will share you. Okay, but my intention is आप पहले वो code समझ लीजिए and then try to write down your own. Okay, don't copy and paste and just change the path. It will not work. Okay, I will share with that code also in simple word. Okay, don't worry. Yeah, thank you.